વારાણસી થી કરવામાં આવે છે. આજની મીટિંગ ભય સૌથી મોટી સમસ્યા ના વક્તા સંધ્યા રાણી બી, રંજનબેન વૈદ્ય, અવિનાશ મિશ્રાજી અને મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વે સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વેને દિવાળીની શુભેચ્છા અને નૂતન વર્ષાભિનંદન. કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. know he is also one with every other. No, he is he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શાંતિ. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू केशवरबेन. संध्या जी, आपका वीडियो प्लीज ऑन कीजिए. थैंक यू. वाओ, यू आर इन अ वेरी वाइब्रेंट साड़ी टुडे. Thank you. Karnataka, yellow and red. Today Yeah. is Karnataka Rajyotsava, Kannada Rajyotsava. करेक्ट. संध्या जी का संक्षिप्त परिचय दे दूं, उसके बाद हम डर पर आज का विषय शुरू करेंगे. उन्होंने टीएस ज्वाइन की 1991 में. वे सिटी लॉज बेंगलुरु कर्नाटका की मेंबर हैं. एमए किया है उन्होंने कन्नड़ा में और एमएल किया है लेबर में, और हुडको में एजीएम की तरह कार्य कर रही हैं. असिस्ट किया है ट्रांसलेटिंग करने में. 15 से 20 किताब में उन्होंने ट्रांसलेशन में भाग लिया है. इंग्लिश से कन्नड़ा में उन्होंने लोकल लैंग्वेज में ये की है. बहुत सारी स्टडी क्लासेस भोवाली, नोडिया, केरला, उड़ीसा और कर्नाटका के कुछ अन्य जगहों पर भी इन्होंने की हैं. राधा जी को इन्होंने असिस्ट किया है और इंक्वायरी ऑफिसर की तरह 3 बार उन्होंने सेवाएं दी हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एट RDR. इनका एम भी हम सब की तरह थियोसॉफी को स्प्रेड करना है. बहुत ज्ञानी है. आपका स्वागत है. विषय पर आगे बढ़िए. थैंक यू. सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा. Shuru kara? Or you will introduce Please start. another 2 speakers? Shuru kara? Thank you. Please First start. of all, I thank Taral Munshi ji for giving me this opportunity to go in detail regarding the subject, that is fear. October 14th is called as Face Your Fears Day. To face our fears, one day has been exclusively meant in the year, that is October 14th. If we take the subject, shall we say that I don't have any fear? Can anyone say? No. All of us have some or the other sort of fears. So let us try to understand what is the meaning of fear. As per dictionary, fear means foreboding, apprehension, consternation, dismay, dread, fright, panic, horror, trepidation, scary, terror, etc. Fear is an acronym, that is short form for false evidence appearing as real. We can take an example, snake. Okay, if we hold the thread, that is thick robe, we might think that it is a snake. So automatically we will imagine that it might be snake instead of rope. That is, all these things are fear. So what is fear? Non-acceptance of what is fear. This is what Jiddu Krishnamurti explains about fear.
Non-acceptance of what is exactly we have to see. That is what is truth. An unpleasant emotion caused by the threat of danger, pain, or harm is known as fear. This is the dictionary definition. Then what are all the reasons for fear? There should be cause and effect, no? So what is the reason? Why we are getting so much scared? Why that fear is ruling us? Fear has become part and parcel of our life. Why? The main thing is sense of security, that is insecurity. Because of insecurity, we are so frightened, we are so fearful. Next is uncertainty, doubt, ignorance, ambition, sense of separateness, etc., etc. We don't want to face as we are, as it is, as we ourselves are. We expect permanency in everything. Is it not true? No. Mind itself is fear. Our mind itself is fear. Our thoughts, opinions are on the basis of our experience, knowledge, and hence it creates fear. That is nothing but our memory. Memory itself is fear. So the next is how fear comes into existence. It is there, no? So it has to come into existence. When one becomes two, fear starts. That evil starts. It may be a comparison, competition, jealousy, envy, not liking, etc., etc. First thing is raga as well as dvesha. In raga, that I want. In case if I don't get, that fear starts. Dvesha, I don't like that. I don't want it to be in this manner. So dvesha, again fear commences from there. This is the main thing. Fear is one of the greatest problems in our life. Fear is one of the greatest problems in life. We have got 101 problem, but fear is the greatest problem. When we don't understand the significance of relationship completely, then fear comes into existence. So life itself is a relationship. That is what Jiddu Krishnamurti has told. Fear starts in the brain, in our brain. That part is known as amygdala. Amygdala. Afraid of someone or something else. Actually, fear is not a word. Fear is not independent in itself. It is always attached to something else. Can we get frightened or scared by our own self? No, it is attached. Attachment itself is fear. We attach to something else, either we like it or we may not like it, but that itself is the main fear. All of us have fear, right? But fear of what? There should be some fear. Fear of what? So fear of the known. This is the basic thing. Whatever we know, that itself is a fear. Mainly fear is of insecurity. I'm insecure, so I'm scared. If someone is there to protect me, I don't have that feeling of insecurity. Threat of immediate physical danger, loss of someone or something dear to us, fear of failure, fear of death, fear of pain, fear of sickness, fear of losing loved ones dying, loneliness. Loneliness is major thing. You really get scared each and everything. We are really scared in case if you are lonely, especially if you are in dark and if you are in where to go, if you don't know the way, then again it's major fear. Fear of rejection, fear of old age, fear of change. This is the main fear. Fear of being judged, fear of heights, fear of falling. When we are there, so many people, they doesn't want to climb or look at down. Fear of darkness, fear of loud noises. In case, like this, really we get scared if we hear some loud noise. Fear of open or crowded space. Then so many people doesn't like to go in use lift. Fear of falling. Then fear of public speaking. This is another fear. People get scared if anyone say anything of anything, anyone ask anything, if I don't know. Fear of judging as well as fear of public speaking is also there.
In 359 direction, one circle consists 360 direction. No? Here, 359 degrees, we are all facing in one form or the other form of fears, except one. What is that exception is love. When we have love within ourselves, then there is no need to get scared. This holds people back from living their best or full life. I cannot live my life in a bindas way, the way in which I wanted to lead my life. Majority of us or all of us live in fear because we don't like to face it, and we push it out and pretend that they're not of that bad, I can manage. But it is a pretension that is not original or real. So pretension doesn't stop us from being fearful. Then fear comes from where? There should be some source, from where it is coming, from where it gets generated. So fear comes from where means I myself is fear. I myself is fear. The interval between the living and dying is fear. I had pain yesterday. There is the memory of it, and I do not want it again tomorrow. Thinking involves the memory of yesterday's pain, projects the fear of having pain again tomorrow. So our thought itself breeds fear. Our thought itself, it breeds fear. Thought also cultivates pleasure. When it can cultivate fear, it can cultivate pleasure also. To understand fear, we must also understand pleasure. They are interrelated. Without understanding one, we cannot understand the other. This means that one cannot say, I must only have pleasure and no fear. Fear is the other side of the same coin, which is called pleasure. This side fear, this side pleasure. What we want, that is raga, dvesha, same way. This is the fear and pleasure are the two faces of the same coin. When we don't use the word fear, what happens? Just imagine, just think. We face some situation, we see something, we are scared, and we don't use the word fear. It is fearful, nothing. What happens? Then it becomes a sensation. If we really observe our own self, there is some sensation in our own self. So fear becomes sensation. Sensation, that's all, nothing else. There is no word. We feel. So what causes fear? We know there is some cause to give some effect. Effect itself is fear. So then what is the cause? The root cause of fear is time. We say, desha and kala is creating. So the root cause of fear itself is time. Time, how can you say time? From what is to what it should be. What is, we are not ready to see what is. Always we want what it should be. I'm not ready to accept this. I want it to be in this way. So how it becomes? To become that, it needs time. That is why the root cause of fear is known as time. The fear is the threat of harm, or real or imaginary. That harm may be real or even imaginary. At times, even we imagine things. This can be physical, emotional, or psychological also. There are certain things which triggers fear in most of us. Is it? My niece had sent one photo to me. When I see lizard, I feel like this. It is so scary. One small kid, that is Barbie doll, it is how it's getting scary. Then if we see cockroach, majority of the housewife will see, now all might have seen. Then in midnight, if we receive some telephone calls, automatically we get scared. Then our nearest and dearest person has gone to some other place, then there some accident happens. Now in Gujarat it has happened, there, in case if I think that my relatives have gone there and that bridge has fallen,
then really I get scared in what has happened to my dear one or my nearest person, my friend or my relative. All those things will come. All these things are fear. Actually, fear begins and ends with the desire to be secure. We want to know whether the person is secure, alive, everything is all right. All those things we want to see. Inward and outward security. This is what we expect. Physical and psychological, with the desire to be certain. This is the way. That certainty is a must for us, and to have permanency. Are we permanent? We ourselves are not permanent, but we want permanency in everything. Whatever we see or we do, we need or we expect permanency. The continuity of permanence is sought in every direction, in relationship, in action, in experience, in knowledge, etc. To find security and to be secure is the everlasting cry. To find security and to be secure is the everlasting cry. Always, since beginning till now, it is crying, crying, crying. It is this insistent demand that breeds fear. I hope all of you are following. To find security and to be secure is the everlasting cry, and it is this insistent demand that breeds fear. When we compare ourselves with another person or with an ideology or psychologically or even physically, then there is something which is striving to become that. And there is a fear in that we may not achieve. We are comparing, but we are not sure. So again, the fear comes into existence. It is the desire to fulfill, and we may not be able to fulfill. I want to fulfill, but I may not be able to fulfill that. Where there is comparison, there is fear. Is it true or false? Please think it over. What happens when we have fear, or what is the result of fear? Something happens, when we have got fear within us. So then what is the fear? When we have fear, we feel nervous. That is the first thing. Our nerves gets disturbed. Restlessness or tension, stress. Our BP increases like anything. Heart rate increases. Breathing fastest. Sweating. Then it chills. Then our hands and feet, it will get toes and all, no? It will get cold. It's literally like an ice we can feel. Trembling muscles, depression, and finally, it destroys love in us. We will lose freedom. This is the main thing. It builds wall between people. Because I'm scared or I'm fearful, I will not understand the reality or practicality. Because of fear, we will not be in the present. Because of our own fear, we cannot be in the present moment and cannot see what is. So we will not be in a position either to observe or to inquire what's happening. We will not be in a position to observe or to inquire. So when we are fearful, we will do something. So what is that we are going to do when we are really scared? First and foremost, we expect someone to come and help in eradicating that fear or removing our fear. This is the first expectation, some help. They have to come and help us from coming out of our own fears. We become very, very polite or obedient. When we know that we cannot face it, then we will become very obedient, or we will be very polite. Whatever the other person says, other thing says, we will follow and do it. In fact, we want to run away from that fear. We don't want to face. First and foremost, let's run away. I don't want to see all these things. I don't want to face any of these things. It's better to run away. That means we are really increasing our fear.
Our fear gets increased in many folds. We pray to God. That is another thing. Till then, nothing. In Kannada, there is one saying, Kastakale Venkataramana. We see Venkateshwara, that is Balaji, when we have some problem during that time. Then the word fear itself increases fear in us. I'm scared to lose my beliefs. I have believed something, if this happens, that will come. So all those things, it's mere my faith. I believe in that. But I'm scared to lose that belief also. That is again doubt. Then fear stops to end. If I finish something, that ends, but I don't want to end it. Let's see at the end what happens. Why I don't want to end my fear. It doesn't like to end anything, because in ending only there is beginning. That is, I don't want to accept the change also. So I don't want to end this and begin the other things. By analyzing, fear will not going to get ended like this or like that. People spend lots of time in analyzing what or what can be. Fear doesn't go. Analysis doesn't help in coming out of fear. Then few people will think, I'll use my willpower so that I can come out of my fear. No, even that is of also no use. Then, is fear is the result of thought? Yes. If it is yes, then thought being always old, fear is also old. है ना? Yeah. Sandhya ji, Thought 3 is the minutes cause more. of fear. 3 ठीक है, minutes more. ठीक है, ठीक है. Thought is the cause of fear. One of the function of thought is to be occupied all the time with something or the other. Always. Why? Most of us want to have our own minds continuously occupied so that we can prevent from seeing ourselves as we actually are. But we are afraid to be empty. We cannot accept ourselves to be empty or doing nothing. We are afraid to look at our fears. Fear darkens our mind. Fear is the destructive energy in us. It is not constructive, it is destructive. It withers the mind, it distorts thought, it leads all kinds of extraordinarily clever and subtle theories, absurd superstitions. Why we are so superstition is because of our own fears. That is why we give sacrifice of animals and all those things. Then dogmas, beliefs, etc. All these things are there. Then in the second session, let's take, is there any indication of fear? From that, let's continue. Thank you. Thank you, Sandhya ji. Yes. And now, रंजन जी, बस आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद आप विषय पर आइए. रंजन जी बहुत ही एक्सपीरियंस थियोसॉफिस्ट हैं और थियोसॉफी नहीं, बहुत अलग अलग विषयों पर गहन अध्ययन किया. Taral ji, I can't hear. You can't hear? Now you can hear. बहुत कम है. आपको सुनाई नहीं दे रहा? बहुत कम सुनाई दे रहा है. अच्छा, ठीक है. मतलब रंजन जी का एक परिचय देना चाह रहा हूँ. रंजन जी काफी एक्सपीरियंस थियोसॉफिस्ट ही नहीं है, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है. आप एमए इंग्लिश, बीडी और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है, स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कार्य किया है और साथ ही आपने मैनेजमेंट के ट्रेनर के रूप में भी आप लगातार कार्यशील रही हैं. साथ साथ मॉरिशस में भी लेक्चर्स दिए हैं और रिसर्च पेपर आपके विभिन्न विद्यालयों में भी पढ़े गए हैं, उनके पास हैं. आप संस्कृत की और ऑडिटरी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, कई नाटक भी आपने किए हैं, अवार्ड्स भी जीते हैं, टीवी एंकर भी आप रही हैं, आप आर्टिस्ट हैं.
से बोल लो। सॉरी चला गया है, लेकिन मैं अपना पूरा करता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। और उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया है और एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है अमृतम के नाम से, जिसे वे अपने जीवन का अमृत कहती हैं। रंजन जी आइए, आप अपना भाषण शुरू कीजिए। हाँ जी, थैंक यू ફોર કાઇન્ડ વર્ડ। આપ સૌના હૃદયમાં પરમાત્મા બિરાજમાન છે, તે સૌને મારા નમસ્કાર। સંભળાય છે? हाँ हाँ, क्लियर, एकदम क्लियर। ઓક્ટોબર 14 એ તમારા ભયનો સામનો કરો એ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। ભયનો અર્થ શું છે? ભવિષ્ય જ્ઞાન જે આપણને ડરાવે, આશંકા, ખળભળાટ, નિરાશા, ભયાનક ડર, ગભરાટ, ભયાનકતા, ગભરાટ, ડરામણી, આતંક અને સર્પરજ્જુ ન્યાય મુજબ ઘણીવાર રજ્જુમાં સર્પનું દેખાવું એ પણ ભય ઉત્પન્ન કરે છે। ભય શું છે? જે તથ્ય છે તેનો અસ્વીકાર કરવો એનું નામ ભય છે। ભય દુઃખ કે નુકસાનથી ઉત્પન્ન થયેલ બિન આનંદપ્રદ લાગણી છે। નુકસાન થાય તો બિન આનંદપ્રદ લાગણી એ ભય છે। ભયના કારણો કયા છે? અનિશ્ચિતતા, શંકા, અજ્ઞાન, મહત્વાકાંક્ષા, અલગતાની ભાવના। આપણે જે છીએ તેમનો સામનો કરવા આપણે તૈયાર નથી। આપણા વિચારો અને અભિપ્રાયો આપણા અનુભવ અને જ્ઞાનને આધારે હોય છે। આથી તે ભય ઉત્પન્ન કરે છે। આપણે દરેકમાં સ્થાયીપણાની આશા રાખી છે, પરમેનન્સની, પણ મન પોતે જ ભય છે, મન પોતે જ ડર છે। ભય અસ્તિત્વમાં કેવી રીતે આવે છે? આપણે જ્યારે સંબંધના મહત્વને પૂર્ણ રીતે સમજતા નથી ત્યારે ભય અસ્તિત્વમાં આવે છે। મગજના જે ભાગમાં ભયનો ઉદ્ભવ થાય છે તેને એમિગડાલા કહે છે। કોઈનાથી કે કોઈ વસ્તુથી ડરવું। આપણને ભય છે, પણ શેનો ભય છે? જે જ્ઞાત છે તેનો ભય છે, નોનનો ભય છે। મુખ્ય ભય છે અસલામતી, તત્કાલીન ભૌતિક ભયનો ડર, કોઈકને કે કશાકને ગુમાવવાનો ડર કે જે આપણને પ્રિય છે, હુ આર ધ ડિયરેસ્ટ વન, એમને ગુમાવવાનો ડર। સૌથી મોટો ભય એ અસફળતાનો છે, મૃત્યુનો ભય છે, યાતના, માંદગી, કંઈક ખોવાનો ડર, પ્રિયજનને મૃત્યુ દ્વારા ગુમાવવાનો ડર, એકલતાનો ડર, અસ્વીકાર થવાનો ડર, વૃદ્ધાવસ્થાનો, પરિવર્તનનો, કોઈ ન્યાય કરશે તેનો ડર, ઊંચાઈ, અંધકાર, ઘણા મોટા ઘોંઘાટનો અથવા પડી જવાનો ડર, ખુલ્લી અથવા ખૂબ વસ્તીવાળી જગ્યાઓનો ડર, લિફ્ટનો ડર, જાહેરમાં બોલવાનો ડર વગેરે। આ વ્યક્તિને સુંદર પૂર્ણ જીવન જીવવા નથી દેતું। આ બધા ડરને લીધે આપણે સુંદર પૂર્ણ જીવન જીવી શકતા નથી। આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો ભયમાં જીવે છે, કારણ કે આપણે તેમનો સામનો કરવા નથી માંગતા અને તેને ધક્કો મારી દઈએ છીએ અને એવો ડોળ કરીએ છીએ કે તેઓ એટલા ખરાબ નથી। હમણાં લાસ્ટ વીક જ મેં FB ઉપર મારી સ્ટોરીમાં મૂકેલું એમર્સનનું સ્ટેટમેન્ટ કે જેનો તમને ડર છે તે સૌથી પ્રથમ કરો, અને આઈ ગોટ મેક્સિમમ લાઇક્સ ફોર ધેટ ઓલ્સો। ભય ક્યાંથી આવે છે? જોનાર ભય છે। જન્મ અને મૃત્યુની વચ્ચેનો વિરામ એ ભય છે। ગઈકાલે દર્દ હતું અને તેની સ્મૃતિ અને આવતીકાલે લાવવી નથી એનો પણ ડર છે। ગઈકાલના ભય વિશે વિચારવું, વિચાર કે જે ગઈકાલના ભયની યાદ અપાવે છે એ આવતીકાલે ભય હશે એનું પ્રક્ષેપણ કરે છે, પ્રોજેક્શન કરે છે। વિચાર ભયને જન્માવે છે, વિચાર સુખને પણ સજાવે છે અને ભયને સમજવા આપણે સુખ કે આનંદને સમજવાની પણ જરૂર છે। આથી કોઈ એમ નહીં કહી શકે કે મને માત્ર આનંદ જ જોઈએ છે અને ભય નહીં, કારણ કે બંને એક સિક્કાની બે બાજુ છે। ભગવાન બુદ્ધને કોઈએ પૂછેલું
તમે મિત્ર કેમ નથી બનાવતા? કારણ કે એ કહે છે મારે શત્રુ નથી બનાવવો, કારણ કે મિત્ર અને શત્રુ એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. ભય શા કારણે થાય છે? ભયનું મૂળ કારણ સમય છે, અને જે થવું જોઈએ, ભય એ સાચા કે કાલ્પનિક નુકસાનની ધમકી છે કે આમ થશે કદાચ. તે ભૌતિક, ઉર્મિશીલ કે માનસિક હોઈ શકે. એવી ચોક્કસ વસ્તુઓ છે જે આપણા મોટા ભાગનામાં ભય પ્રગટ કરે છે. ભયના પરિણામો ક્યાં છે? જ્યારે આપણે ભય અનુભવીએ છીએ ત્યારે આપણે હતાશા, ઉદ્વેગ કે સ્ટ્રેસ એટલે કે તણાવ અનુભવીએ છીએ. બીપી વધે છે, હૃદયના ધબકાર વધી જાય છે, ખૂબ ઝડપથી શ્વાસ લઈએ છીએ, પરસેવો થાય છે, અને અત્યંત ઠંડી કે સ્નાયુઓની ધ્રુજારી અને નિરાશા અનુભવીએ છીએ, જે આપણામાં પ્રેમનો નાશ કરે છે, નષ્ટ કરે છે. આપણે સ્વતંત્રતા ગુમાવીએ છીએ અને વ્યક્તિઓ વચ્ચે દિવાલ ઊભી થઈ જાય છે. મને વાસ્તવિકતા કે વ્યવહારિકતાની સમજ પડતી નથી. આપણને ભય લાગે ત્યારે શું કરવું જોઈએ? કોઈ આવે અને આપણો ભય દૂર કરે એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ. આપણે ખૂબ વિનમ્ર થઈ જઈએ. આપણે ભયથી દૂર ભાગવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જે માત્ર ભયને વધારે છે. આપણે બચવા માટે ઈચ્છીએ છીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપણને માન્યતાઓ ગુમાવવાનો ડર લાગે છે. એનું વિશ્લેષણ પણ મદદ કરતું નથી. સંકલ્પ શક્તિ વાપરવાથી પણ ભય જતો નથી. ભય કેવી રીતે જોવો? કઈ દ્રષ્ટિથી જોવો? જ્યારે વિચારની ગતિ નથી હોતી ત્યારે મન અભયને એટલે કે ભયને સંપૂર્ણ રીતે જોઈ શકે છે. ભય એ ભ્રમણા છે. જ્યાં પરિગ્રહ હોય, ખૂબ બધું ભેગું કરવાની ઈચ્છા, માલિકી જ ભાવ હોય, આ બધું મારું છે, પોઝેસિવનેસ, ત્યાં ભય હોય છે. ભયનો સામનો કરવા અત્યાધિક શક્તિની જરૂર હોય છે. પૂર્ણ એકાગ્રતા, પૂર્ણ જાગૃતિ, પસંદગી વિનાની જાગૃતિની જરૂર હોય છે. વર્તમાનમાં સંપૂર્ણ જાગૃતતાની જરૂર છે. આપણે સલામતી માટે બધા જ દ્વારો બંધ કરી દઈએ છીએ. ભય એ ટુકડે ટુકડે કે સોપાન દર સોપાને નહીં, પણ સંપૂર્ણતયા હટાવવું જોઈએ. મન એ દ્વૈતમાં કે સંઘર્ષમાં ના હોવું જોઈએ. હુંનું અસ્તિત્વ ના હોવું જોઈએ. જાણે કે હું ભયમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો છું. સેકન્ડ પાર્ટમાં હું ધ પરમિશન ઓફ ધ ચેર હું 2-4 કોટ્સ મૂકવા માંગીશ કે જ્યારે અભયનો આવિર્ભાવ થાય છે દેહમાં, ત્યારે આપણે શું બને છે તે આપણે જોઈશું. અસ્તુ, આભાર. थैंक यू सो मच. अब मैं अविनाश जी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ. अविनाश जी आप अभी जुड़े हैं और एक मिनट. अविनाश मिश्रा जी प्रज्ञा लॉज लखनऊ से संबंधित रखते हैं और वे क्वालिफिकेशन के हिसाब से लॉ ग्रेजुएट हैं. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भारत में कार्य करते हैं और उसके साथ ही वे सक्रिय रूप से फर्स्ट जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं और सोसाइटी से 1 साल पहले ही जुड़े हैं. प्रथम बार त्रिवेणी पर आ रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. अपनी स्पीच आप हिंदी में शुरू कीजिए. धन्यवाद. धन्यवाद तरल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. पहली बार इस प्लेटफॉर्म में आने का मुझे मौका मिला. आज का जो विषय है वो डर है, जो कि जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं से एक. डर, क्योंकि अभी 14 अक्टूबर को हम लोगों ने फेस योर फियर्स डे मनाया, तो उसी संबंध में हम लोग डर के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं. डर जो है, डर का अर्थ है किसी अप्रिय या अनपेक्षित घटना के बारे में पूर्वाभास, कोई शंका, घबराहट या निराशा. ये भय किसी चीज का या तो दहशत है, भयावता है, घबराहट है, डरावनापन है, आतंक है. जैसे वास्तव में हम कभी सांप देखने में या किसी और झूठे झूठ के उसमें भी हम लोग जो है संक्षिप्त रूप में डर को मानने लगते हैं कि डर है. किसी भी अप्रिय भावना या किसी खतरे का अनुमान होने में या दर्द का
खतरा होने पे हमें डर महसूस होता है। और डर, जब हम डर शब्द का प्रयोग नहीं करते तो डर जो है एक प्रकार का सेंसेशन के रूप में हमको लगता है कि हाँ, हमें कुछ डर सा लग रहा है। डर के जो मेन कारण है वो है अनिश्चितता, संशय, अज्ञानता, महत्वाकांक्षा, अलगाव की भावना, या हम जिन चीजों का हम सामना नहीं करना चाहते, जो ऐसी अनपेक्षित है जिनकी हमें अपेक्षा नहीं है, ऐसा कुछ ऐसी चीजों जिनका हम सामना नहीं करना चाहते, उनको, या हम अपने विचार के अनुभव या ज्ञान के आधार पर हम उनसे दूर रहना चाहते हैं, वो भय पैदा करते हैं। और भय, और हम हर चीज में जो स्थायित्व की उम्मीद करते हैं, स्थायित्व जैसा मतलब हम किसी भी परिवर्तन को इतनी जल्दी जो है वो परिवर्तन होने में, परिवर्तन को अपने आत्मसात करने में हम लोग जो है भय महसूस करते हैं, क्योंकि हम उसी जीवन में, उसी माहौल में, उसी तरह रहना चाहते हैं जिस तरीके से अभी तक हम लोग रहते हैं। किसी भी परिवर्तन को हम लोग सहजता से स्वीकार नहीं करते, बजाय उसके उसको डर के। ठीक है, डर जो है, डर हमारे मन में अस्तित्व में तब आता है कि जब हमारा दिमाग डरने लगता है। दिमाग का जो हिस्सा डरता है उसको हम लोग एमिडाला कहते हैं, जिसमें वो किसी न किसी चीज से उसको डर लगता है। डरना डरना अपने आप में कोई स्वतंत्र या प्रक्रिया नहीं है। डर हमेशा किसी न किसी तीसरी चीज से जुड़ा होता है, इसमें जिनका हम सामना नहीं करना चाहते या जिनको हम आमने सामने देखना नहीं चाहते। किसी ज्ञात किसी डर हमें कि किसी बात का डर होता है, किसी ज्ञात वस्तु का डर होता है। मुख्यतः हमें असुरक्षा का डर होता है, जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा असुरक्षा का डर पाया जाता है। वो चाहे किसी फिजिकल डैमेज या मतलब किसी शारीरिक प्रकार से किसी प्रकार का कष्ट हो, या हमें किसी चीज से किसी असफलता का डर हो, या हमें मृत्यु का डर हो किसी, या हमें कोई भी पेन या कोई भी दर्द ऐसा हुआ जिसको हम दोबारा याद करके हम उससे डरने लगते हैं। और डर अस्वीकार्यता का डर है कि जैसे हम जो चीज या जितना भी हम अपने जीवन में जो भी चीजें करना चाहते हैं या उसकी हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो उसका भी डर लगता है। बुढ़ापे का डर है, कुछ लोगों को ऊंचाई से भी डर लगता है, अंधेरे से भी डर लगता है। डर के कई होते हैं, गिरने से डर होता है। डर जो है वो किसी भी क्राउड में रहने, मतलब किसी भी भीड़ भाड़ की जगहों में रहने में भी उनको कभी कभी डर लगता है। और सबसे बड़ा डर एक जो हम सामाजिक, जब भी कोई वार्तालाप में या किसी तरीके के वाद विवाद में होते हैं तो उसमें भी हमको डर लगता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। इस बात का भी हमें एक डर लगता है। तो इसी प्रकार कई सारे वो डर जो हम जो है जिनके बारे में हम, जो हमारे अनापेक्षित है, जिसकी हम अपेक्षा जीवन में नहीं करते हैं, जब भी वैसा कुछ भी होने का आभास या वैसा कुछ भी हमारे जीवन में होने की हमको आशंका होती है तो हमको डर महसूस होता है। और जैसे जीवन में मंत्र, जो जीवन में डर, हाँ आगे जाऊंगा, जीवन डर महसूस होता है। और हम जैसे मरने और जीने के बीच में डरते हैं, जैसे हमें कोई दर्द अगर कल था और हम उसकी, जब भी हमको वो याद आता है तो हमको कल ऐसा ना हो, इस बात से हमको डर लगता है। ठीक है, डर हमें किसी और भी प्रकार से, जैसे डर जो है हमें किसी और भी प्रकार का, जैसे किसी भी ऐसी चीज जिसका हमें भय हो, जो हम नहीं होना देना चाहते हैं जीवन में, अगर वैसी घटना होने की कभी भी आशंका होती है तो हमको डर महसूस होता है, हमको डर होता है। डर का जो दूसरा पहलू है, जो वो आनंद है, क्योंकि
डर को जो है जब हम दूसरे पहलू में उसको अगर हम करते हैं तो हम उसको डर को आनंद के रूप में करते हैं। डर का जो मूल कारण है वह का मूल कारण है कि क्या से क्या होना चाहिए उसके बारे में हमें डर होता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ आनंद जो है प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि किसी प्रकार के डर। डर जो है समय, डर का जो मूल कारण है वो समय है कि हम ये चाहते हैं कि जो है क्या हमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में जो है हमें एक तरह का डर होता है। डर जो है वो शारीरिक हो सकता है, हमारे भावनात्मक डर हो सकता है, या किसी तरह से किसी की हमारी पूर्वाग्रह की वजह से भी हमको ये डर महसूस हो सकता है, या वो हमारा डर हमारे लिए वो प्रभावी हो सकता है। डर होने में के बाद हमें जो है बहुत परिणाम, जैसे डर का जो परिणाम होता है उसमें हमें डर जो है वो नर्वसनेस, बेचैनी, हमें स्ट्रेस या तनाव उत्पन्न करता है। हमारे जो दैनिक दिनचर्या जो हमारे फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं, ऐसे बीपी बढ़ जाना या हृदय गति बढ़ जाना या सांसों का जो सामान्य चलन परिचलन है उसमें भी डर जो है वो व्यवधान उत्पन्न करता है। कुछ लोगों को डर में पसीना आता है, ठंड लगता है, मांसपेशियां कांपने लगती, कुछ लोग अवसाद की स्थिति में भी, डर की स्थिति में अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। वो हमारे अंदर के प्यार को भी नष्ट कर देता है, हम आजादी खो देते हैं, हम जो है हम ये लोगों के बीच में एक तरह का दीवार सी बन जाती है जिसकी वजह से हम जो वास्तविकता या व्यवहारिकता को समझ नहीं पाते, और उससे हमें एक हम किसी से राय और वो लेना भी बंद कर देते हैं। सर डर 2 की वजह मिनट्स से हमको, अविनाश जी फर्स्ट हाफ का 2 मिनट्स लेफ्ट। थैंक यू। डर जो है, डर में हम लोग भागते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा डर कोई और दूसरा व्यक्ति मिटा सके या हमें डर से निकालने में हमें मदद कर सके। हम बहुत विनम्र हो जाते हैं, बजाय डर, इसके बजाय हम डर को भगाना चाहते हैं, बजाय हम भागते हैं केवल डर से। डर का मतलब जो है हम डर से भागना, डर को भगाना नहीं, हम डर से भागना चाहते हैं। इसी प्रकार डर जो है हमारी डर का सामना करने के लिए हमको जबरदस्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता की आवश्यकता होती है, और वर्तमान सतर्कता की आवश्यकता होती है। हम सुरक्षित होने के लिए सभी दरवाजे बंद कर सकते हैं, बंद कर देते हैं, और टुकड़े टुकड़े में या हर कदम ना उठाया जाए, भय में पूरी तरह से समग्रता से आज ही हम अपने डर को दूर करें। और कुछ भी कुछ काम नहीं करता, मन एक अंतर्द्वंद में रहता। यहाँ पे कोई मैं नहीं, मैं डर से बाहर हूँ, आ रहा हूँ नहीं, या केवल भय विवरण देख के या एक एक करके डर से निपटने की कोशिश करें, अपने केंद्रीय मुद्दों पर न जाए, क्योंकि जो है डर जो कि एक तरह का फॉल्स अपने अंतरात्मा, अपने विल पावर को इस्तेमाल करते हुए डर को जो है हम दूर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। संध्या जी अपना द्वितीय भाग कहिए। थैंक यू। हाँ जी, अपना सेकंड पार्ट कहिए संध्या जी। एम आई ऑडिबल? संध्या जी आप शुरू कर सकती हैं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ओके, थैंक यू। Is there any indication of fear? हमको बहुत डर है, whether we can know about it or not. Yes, envy and jealousy are the main indications of fear. When we are really got fear or scared, no, we want to become that enviness, automatically it is there. Then jealousy is another indication that we are scared. So by seeing that, we know that we cannot achieve that, so we feel very much jealousy about it.
A man who is not afraid of anything, evil, not be aggressive. A man who has no sense of fear of any kind of is really a free and a peaceful man. The man who is really got scared is always at peace. Can you hear? Yes, आवाज आ रहा है? loud and clear. Yeah, loud and clear. ठीक है. Then how to see fear? We have got fear, we have got envy, we are jealousy. All those things are there. Then how to see, how to check? When there is a movement of thought, then the mind can look at a total fear. When there is no movement of thought, our mind, it is not nahi ghum raha hai, then that mind can look at a total fear. When there is accumulation, that is possession, then there is fear. All of us possess something or the other, always. Why we are locking our house? Because something is there in our house. Why we appoint security guard to our house? Because we want to protect this. Then why we have opened bank locker? Because we possess, we don't want to lose, and we are scared in case if it is there, someone steals it, so it will go. Because of fear only, we do all these kinds. Only when I merge with what is, or in reality, then there is no fear. We are not ready to merge. That duality is always there. We need tremendous energy to face the fear. That total concentration is required. Total awareness is required. That is what JK says. That is choiceless awareness. Complete alertness, attentiveness in the present is required. If we are completely alert and attentive in what is, or if we are in present, then all these things are not there. Fear is not there. We can see fear in totality. When there is complete attention, then there is no fear. But the actual fact is inattention breeds to fear. Fear arises when there is an avoidance of the fact, a fight, then very escape itself is fear. And I want to escape and run away, no, that itself is fear. We will shut all the doors to be secured. Is it true or not? I still remember in 1972, my grandmother was alive. That war was there. Indo-Pakistan or Indo-China, I don't remember. Then we never even used to switch on the lights during night. That off covered bulb we used to use and all those things. Everything is because of fear only. Fear cannot be removed in fragment or in step-by-step way. Remove the fear completely in totality. By cutting the branches, tree cannot be removed. We have to cut in the root itself. That root has to be removed. Then only the tree goes. Otherwise, it breeds again. Today, something, tomorrow something, it doesn't work in that pattern. The mind should not be in conflict or in duality. It should have clarity should be there. There is no I here. I will come out of fear tomorrow. No, it will not work in that way. If we look merely at the details of fear or try to deal with our fears one by one, we will never come out of the central issue, which is to learn to live with fear. The central issue is we have to learn to live with the fear. Fear is never an actuality. It is either before or after the active present. Fear is now. When there is fear in the active present, is it fear? Yes, it is there and there is no escape from it, no evasion possible. I don't want to face it. Seeing face to face. Actually, what is fear means? Fear is an illusion. Fear is mere illusion. There is no past memory, no fear of future, no fear of losing, no emotion. This requires discipline. Discipline means what? Learning, grasping, and knowing.
Then only we can come out of the known frame. Fear of the known only, na? So we have to come out of the known frame. For this, we have to observe our thoughts with love and care. I told no, 359 degrees fear is there. There is only 1 degree, that is where there is love, there is no fear. So we have to observe our thoughts. Thought itself is a fear. We have to observe our thoughts with love and care. Then only we can come out of inner and outer fears. That is physical fear as well as psychological fears without translating it or without naming it. Wisdom alone can end fear. Wisdom alone can end fear. When we love, there is no fear. Here, there is no sense of separateness is there. When there is no sense of time, there is no fear or exploitation or any sort of problems. If we can see ourselves honestly as we are, then there is no fear. Then teacher or God or dependence is not required because we are confident we can do whatever we want. No need to pray to God, no need to ask any sort of help. We don't require any teacher to guide us how to come out of this fear, all those things. Only in love, mutation can take place in the mind with time, pleasure, and fear has come to an end. Only in love, mutation can take place, not otherwise at all. A mind that is caught in fear lives in confusion, in conflict, and therefore it is violent, distorted, and aggressive. Aggressive is the main thing. It does not move away from its own patterns of thinking, and this breeds hypocrisy, that is, two-facedness. Until we are free from fear, we may climb the highest mountains, invent every kind of God, but we still remain in darkness. This is what Jiddu Krishnamurti has said. So, how to overcome fear? Fear is there. We have to come out of that. All those attention, awareness, everything is also there. We are there. We have tremendous amount of energy in us and we dissipate it through fear. But when there is this energy which comes from throwing off every form of fear, that energy itself produces the radical inward revolution. Whatever the energy is there, if it is there without fear, then that inward revolution takes place. Self-knowledge is the beginning of wisdom, which is ending of fear. Self-knowledge is the beginning of wisdom and which is the ending of fear. Again, this is also Jiddu Krishnamurti's quote. We need not have to do anything about it. If we come across fear, we have to stare at it into its eyes, face it, and then we can notice that fear automatically fades away. This is what have come to understand about the fear. Then so many people have given so many quotes on fear. First, let's start with Jiddu Krishnamurti. What Jiddu Krishnamurti talks about fear. The movement from certainty to uncertainty is what I call fear. That is what Jiddu Krishnamurti says. Then Nelson Mandela has said, I learned that courage was not in the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. That is the brave man. Then Thich Nhat Hanh, recently the Buddhist monk who passed away, what he says about fear is, fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see and the beautiful sky. Our ears can still hear the voice of our loved ones. It's very nice, no? Again, Jiddu Krishnamurti has said, fear of a name
increases fear of the thing itself. Fear of a name increases fear of the thing itself. The key to change is let go of fear. The key to change is let go of fear. This is what Rosne Cass has told. Then the alchemist, that is Paulo Coelho, has said, there is only one thing that makes a dream impossible to achieve. There is only one thing that makes the dream impossible to achieve is the fear of failure. So one has to try again and again and face it as it is. Then another person, that is Varnoka Roth, Divergent, has said that fear does not shut you down, it wakes you up. If we are fearful, no, that during that time we cannot sleep. There is no question of peaceful sleep at all. Then Judy Bloom says, each of us must confront our own fears. No one can come and confront our fears. Each one of us must confront our own fears, must come face to face with them. How we handle our fears will determine where we go with the rest of our lives. To experience adventure or to be limited by the fear of it. When there is fear, we limit ourselves automatically. Then Eleanor Roosevelt says, we gain strength, courage, and confidence by every experience in which we really stop to look at fear in the face. We are able to say to ourselves, I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along. We must do the thing we think we cannot do. We stop, no? Once we know that we cannot do, we stop. But that should not happen. Then again, it about fear. Lie, Bardugo, Cooked Kingdom. He says, fear is a phoenix. You can watch it burn 1,000 times and still it will return. How much ever time that we try to come out of our fears, fear comes again and again and in almost in the same form. Very rarely when we are really courageous enough to face, then only fear goes out of us completely. Then again, fear is the process of the mind in the struggle of becoming. That is what I told. Fear is time. Fear is a process of the mind in the struggle of becoming from what is to what it should be. In becoming good, there is a fear of evil. In becoming complete, there is a fear of loneliness because we love fear. Otherwise, you would have removed and kicked it out. Because we are in love with fear, we are still continuing, we are giving fuel to it. The ending of fear is death. The death of fear is the only death. So what is needed here is, rather than running away or controlling or suppressing or any other resistance, understanding fear, that means watch it, learn about it, come directly into contact with it. We have to learn about fear, not how to escape from it. 2 Thank minutes you more, once Sandhya again, ji. Okay. Murli Munshi ji, for giving Ji, me ji, this ji. opportunity Okay, to thank you so much. share few thoughts on fear. Thank you once again. Thank you. Please stay there. After then जी somebody. मुझे आवाज बहुत कम आ रहा है. अच्छा नहीं आ रहा है आवाज तो यहाँ पर मुझे आ रहा है आवाज. 5% भी नहीं है. कोई बात नहीं. रंजन जी आप अपना अनम्यूट कीजिए और पार्ट 2 प्लीज सुनाइए सब. ભય સાથે જીવતા શીખો. ભય એ ક્યારેય વાસ્તવિકતા નથી. તે પ્રવૃત્તિશીલ વર્તમાનની પહેલા કે પછી હોય છે. ખરેખર તે જ ક્ષણે જ્યારે ભયની ક્ષણ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખીએ, ભૌતિક કે માનસિક તો ભય નથી રહેતો, પણ બેધ્યાનપણામાંથી ભય જન્મે છે. હકીકતથી દૂર ભાગવામાં ભય રહેલો છે. કોઈ અતીતની સ્મૃતિ કે ભાવિનો ભય, ગુમાવવાનો ભય ના હોય અને કોઈ લાગણી ના હોય, આ બધા માટે શિસ્તની જરૂર છે. શીખવું, ગ્રહણ કરવું, જાણવું વગેરે.
આપણે આપણા વિચારોને પ્રેમ અને કાળજીથી જોવા જોઈએ. સ્વનું જ્ઞાન એ પ્રજ્ઞાની શરૂઆત છે. માત્ર પ્રજ્ઞા કે ડાપણ જ ભયનો અંત લાવી શકે છે. જ્યારે આપણે પ્રેમપૂર્ણ હોઈએ છીએ ત્યારે ભય નથી હોતો. જ્યારે સમયનો બોધ નથી હોતો, આપણે આપણી જાતને પ્રામાણિકતાથી જોઈએ છીએ ત્યારે ડર નથી હોતો. માત્ર પ્રેમમાં જ મનમાં ઉન્મૂલન શક્ય છે. આનંદ અને ભય અંત પામે છે. ઉન્મૂલન માટે કૃષ્ણમૂર્તિ શબ્દ વાપરે છે મ્યુટેશન. નિશ્ચયાત્મકતામાંથી અનિશ્ચિતતા તરફની ગતિને હું ભય કહું છું. કૃષ્ણમૂર્તિ. બનવાના સંઘર્ષની મનની પ્રક્રિયા એ ભય છે. સારા બનવામાં દુષ્ટ બની જવાનો ભય છે. પૂર્ણ બનવામાં એકલતાનો ભય છે. શું ભય એ વિચારનું પરિણામ છે? જો હા, તો વિચાર હંમેશા પુરાણો હોવાથી ભય પણ પુરાતન છે. વિચારના ઘણા કાર્યોમાંનું એક છે હંમેશા કશાકની સાથે વળગેલા રહેવું, બી ઓક્યુપાઈડ. આપણામાંના મોટા ભાગના આપણા મનને વ્યસ્ત રાખવા માંગીએ છીએ, જેથી આપણે જે છીએ તે જોવામાંથી બચી જવાય છે. આપણને ખાલી થવાનો ભય છે. આપણે આપણા ભયને જોવાથી ડરીએ છીએ. ભય જન્મે છે અને નષ્ટ થાય છે એ આપણી સલામતીની ઈચ્છા, આંતર અને બાહ્ય સલામતી, નિશ્ચિતતાની ઈચ્છા, સદાય સ્થિર રહેવાની ઈચ્છા, અને તે પણ દરેક દિશામાં, સદગુણમાં, સંબંધમાં, કાર્યમાં, અનુભવમાં, જ્ઞાનમાં આમ સલામત રહેવું એ હંમેશની ઝંખના છે. આપણે જ્યાં સુધી ભયથી મુક્ત થયા નથી ત્યાં સુધી આપણે ઉચ્ચતમ પર્વતને સર કરીએ કે દરેક પ્રકારના ઈશ્વરનું સંશોધન કરીએ, પરંતુ આપણે અંધારામાં જ રહીશું. કૃષ્ણમૂર્તિજી છે. આજ્ઞા પાલનમાં ભય છે અને ભય મનને અંધકારમય બનાવે છે. જ્યારે તમે પોતાની જાતને વાદની દ્રષ્ટિએ, માનસિક રીતે કે પછી શારીરિક રીતે પણ બીજાની સાથે સરખામણી કરીએ છીએ તો તેમાં તે બનવાનો પ્રયાસ છે અને તમે નહીં બની શકો તેનો ભય છે. મત્સર અને ઈર્ષ્યા એ ભયની નિશાની છે. જે માણસ ડરતો નથી, આક્રમક નથી, જેને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી, તે મુક્ત અને શાંત માણસ છે. ભય એ માણસમાં વિનાશકારી ઉર્જા છે. તે મનને હલબલાવે છે, વિચારને વિકૃત કરે. તે માણસને બધા જ પ્રકારના અસાધારણ, હોશિયાર અને સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતો, વિચિત્ર વહેમો, નિયમો અને માન્યતાઓ તરફ ખેંચી જાય છે. ડેલ કાર્નેગી કહે છે, નિષ્ક્રિયતા મનને ભયને જન્માવે છે અને ક્રિયા આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત જન્માવે છે. સંધ્યાજીએ કેટલાક કોટેશન્સ મૂક્યા, એમાંના થોડાક મૂકું છું. નેલ્સન મંડેલા કહે છે, બહાદુર માણસ ડરતો નથી એ નહીં, પણ જે ભય પર વિજય પામે છે તે છે. મેરી ક્યુરી કહે છે, જીવનમાં કશાયથી ડરવાનું નથી, માત્ર સમજવાનું છે. રોસિયન કેશ કહે છે, પરિવર્તનની ચાવી છે ભયને જવા દેવો. પાઉલો કોએલ્હો એ કહે છે, સ્વપ્નને સાકાર થવાનું અશક્ય બનાવે છે માત્ર એક જ વસ્તુ, નિષ્ફળતાનો ભય. વૈજ્ઞાનિક વેરોનિકા રોથ કહે છે, ભય તમને બંધ નથી કરતો, તે તમને જગાડે છે. જે કે રાઉલિંગ કહે છે, બહુ ફેમસ વ્યક્તિ, કે નામનો ભય તે વસ્તુના ભયને વધારે છે. ભગવાન બુદ્ધે અંગુલી માલને, આટલા ક્રૂર માણસને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તું આ વૃક્ષ પરથી પાંદડા તોડ, પછી હવે તું જોડી શકે છે તો કે ના, તે તું આંગળી કાપે તો આંગળી જોડી શકે છે કે ના. અને એમાંના ભીતરમાં રહેલા અજ્ઞા, એમના અભયને કારણે સંપૂર્ણ પરિવર્તન થયું અને એને એમણે નામ આપ્યું અહિંસક. મહાવીર સ્વામીના કેસમાં પણ પરકોટક નાગની આપણે વાર્તા જાણીએ છીએ કે કેવી રીતે આ રીતે એમના ઉપર કાબુ જમાવે છે. અમારા સૌરાષ્ટ્રના ગિરનારમાં અંડરગ્રાઉન્ડ સંતો રહે છે અને તેમને ત્યાં બકરી છે, ગાય છે, સિંહ છે, વાઘ છે, બધા સાથે ફરતા હોય. એટલે જેનામાં અભયનો આવિર્ભાવ થાય છે તેની ચારે બાજુ એ વ્યક્તિ, એ પ્રાણી હોય કે ગમે તે હોય, એ પોતાનામાંની વેર વૃત્તિ એ તોડે છે. એ અભય ની જાગૃતિનું એક મોટું લક્ષણ છે. રમણ મહર્ષિએ પણ બહુ સરસ કીધું છે કે બીજો કોઈ છે ના, હું જ છું. મીન્સ હું અને તમે એક છો, હું અને વિશ્વ એક છું. વિશ્વનું સમગ્ર અસ્તિત્વ તમારામાં છે, તો પછી કયો ભય છે? આથી ગીતામાં ભગવાને બહુ સુંદર 16 અધ્યાયમાં દૈવી સંપત આશ્રય યોગ કયો છે. એમાં દૈવી સંપત્તિઓના
16 ગુણ ગણાવ્યા છે. એમાંનો પહેલો જ ગુણ મૂક્યો છે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. અને એને કારણે સ્વામી વિવેકાનંદ એ ત્રાવણકોરના મહારાજાને પણ ખરું ખોટું સંભળાવી શક્યા હતા. તો અમારા નારેશ્વરમાં, ગુજરાતમાં નારેશ્વર જગ્યા છે, રંગઅવધૂત મહારાજ મહારાષ્ટ્રીયન, એ આવ્યા ત્યાં અને એમણે સાપને નોળિયાને સાથે રમતા જોયો, સાપને મોરને સાથે રમતા જોયા, અને એમણે જોયું કે આ ધરતી પર વેર વૃત્તિનું અસ્તિત્વ નથી, અભયનું અસ્તિત્વ છે. એટલે અભય તો એકચ્યુઅલી આપણામાં એક જબરજસ્ત ઉર્જા છે અને એ ઉદ્ભવવી જોઈએ. તો ભય આપોઆપ નાશ થઈ જશે. અને જ્યારે આ એકત્વ અદ્વૈતમાં રહીશું આપણે, ત્યારે જ આ વસ્તુ શક્ય બનશે. એટલે નિર્વૈર આવશે અને એ અભયથી આવશે. અસ્તુ. આભાર. थैंक यू सो मच रंजन जी. और अविनाश जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना हिंदी में पार्ट 2 का व्यक्तित्व दें. बहुत बहुत धन्यवाद. शुरू करें सर. सेकेंड पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि डर जो है, डर कभी हकीकत नहीं. डर या तो वह सक्रिय उपस्थिति से पहले होता है या बाद में होता है. जब सक्रिय वर्तमान में भय है तो क्या वह भय है? वो वहां है जहां इससे कोई बच नहीं सकता. वहां उस वास्तविक क्षण में खतरे के क्षण में पूर्ण ध्यान होता है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक. जब हम पूर्ण ध्यान में हो तो भय नहीं रहता, लेकिन असावधानी का वास्तविक तथ्य भय को जन्म देता है, अतः भय उत्पन्न होता है. जब तथ्य का परिहार या उड़ान होती है तो पलायन भी भय है. कोई पिछली स्मृति नहीं है, भविष्य का कोई डर नहीं है, खोने का डर नहीं, जज्बा नहीं है. इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, सीखना और समझना. तभी हम ज्ञात फ्रेम से बाहर आ सकते हैं. इसके लिए हमें अपने विचारों को प्रेम सावधानी से देखना होगा, ताकि हम अपने आंतरिक और बाहरी भयों का अनुवाद किए बिना, हम उनके नाम लिए बिना उनसे बाहर आ सकते हैं. ज्ञान की शुरुआत है. केवल बुद्धि ही भय को समाप्त नहीं कर सकती. जब हमारे पास प्यार या होता है तब वो डर नहीं होता. जब हमें समय का बोध नहीं होता तब कोई भय, शोषण या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं. जब हम खुद को ईमानदारी से देख सकें जैसे हम हैं, तो कोई डर नहीं होता. तो शिक्षक या ईश्वर या निर्भरता की आवश्यकता नहीं. प्रेम के समय में ही मन में उत्परिवर्तन हो सकते हैं और भय का अंत हो सकता है. जैसे जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि निश्चिंतता से अनिश्चितता की ओर बढ़ना ही डर कहलाता है. संबंध में संघर्ष की प्रक्रिया, अच्छा बनने में बुराई का डर या मुकम्मल होने में अकेलेपन का डर, क्या डर का परिणाम है? अगर हाँ, तो विचार हमेशा पुराना होता है, डर हमेशा पुराना होता है. विचार भय का कारण है. विचारों के कार्यों में से एक है हर समय चीज में व्यस्त रहना. हम में से अधिकांश लोग, हमारा दिमाग लगातार व्यस्त रहे ताकि हम खुद को वैसा ही देखने से रोक सकें जैसे हम वास्तव में हैं. हम खालीपन से डरते हैं. हम डरते हैं, हम डर को देखने के लिए डरते हैं. दरअसल भय सुरक्षित होने की इच्छा के साथ शुरू और समाप्त होता है. आवक और जावक सुरक्षा, निश्चिंत होने की सुरक्षा तथा स्थायी होने की सुरक्षा, हर दिशा में, सद्गुण में, संबंध में, क्रिया में, अनुभव में, ज्ञान में, तब बाहरी और आंतरिक चीजों के स्थायित्व की निरंतरता मांगी जाती है. सुरक्षा पाने के लिए हम सुरक्षित होने के लिए चिरस्थायी होना, लगातार मांग के डर होना. एक मन जो डर में फंसा हुआ है, भ्रम में है, संघर्ष में रहता है, इसलिए उसे हिंसक, विकृत और आक्रामक होना चाहिए, और वह अपने पैटर्न से दूर जाने की हिम्मत नहीं करता. सोच और पाखंड भी डर को जन्म देते हैं. हम जब तक भय से मुक्त नहीं हो सकते, जब तक हम ऊंचे पहाड़ में चढ़ सकते हैं, हर तरह के ईश्वर का आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन हम अंधेरे में ही रहेंगे. ऐसा जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा. आज्ञाकारिता ही हमेशा भय रहता है. भय
मन को काला कर देता है। जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से भी, तो हम वह बनने का प्रयास वह बनने का प्रयास होता है और डर होता है कि आप वैसा नहीं कर सकते। यह इच्छा पूरी करने की तथा इससे पूरे करने में जब सक्षम नहीं होते हैं तो उसमें हमें भय होता है। भय ईर्ष्या और ईर्ष्या के भय भी एक भय का संकेत है। जो व्यक्ति भयभीत नहीं होता वो आक्रामक नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का भय का भाव नहीं होता, वास्तव में वही स्वतंत्र शांत चित्त व्यक्ति है। भय मनुष्य के में विनाशकारी ऊर्जा का संचार करता है। वह मन को मुरझाता है, विकृत विचारों को सामने लाता है, असाधारण चतुर व सूक्ष्म सिद्धांत बेतुके अंधविश्वास अज्ञानता और को जन्म देता है। तथा आत्म पर डर पे कैसे काबू पाया जाता है? हम पॉजिटिव होकर पॉजिटिव होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम भय को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यह ऊर्जा हमें हर प्रकार के भय से दूर करने से आती है। आज जो ऊर्जा हम स्वयं अमूलचूल आंतरिक क्रांति उत्पन्न करती है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपके सामने डर आए तो उसकी आंखों में देखें, इसका सामना करें, तो आप डर से दूर हो सकते हैं। हम से प्रत्येक को स्वयं डर का सामना करना चाहिए। उससे हम उसको कैसे संभालते हैं तथा अपने शेष जीवन में कहाँ तक उसको ले जाते हैं, इसका जो है ये रोमांच का अनुभव ही के लिए ही रोमांच का अनुभव ही जो है हमें इससे डर से सीमित रहें। जूडी ब्लूम का कहना है कि हम हर उस अनुभव से ताकत, साहस और आत्मविश्वास हासिल करते हैं जिनमें वास्तविक चेहरे में हम डर को देखना बंद कर दें। आप अपने आप से कह सकते हैं कि भयावता, मैं इस भयावता से गुजरा हूँ, मैं अगली चीज ले सकता हूँ जो उसके साथ आती है। आपको वह करना चाहिए जो कि वह आप नहीं कर सकते। एनरोल रूजवेल्ट, आत्मज्ञान की शुरुआत ही भय का अंत। जो भय के बारे में कहते हैं कि बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर वह है बल्कि वो है जो जीतता है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा। जीवन में किसी भी डर से डरना नहीं बल्कि उसे समझना चाहिए। मैडम क्यूरी के अनुसार वो डर हमें अतीत पर केंद्रित रखता है, भविष्य के बारे में चिंतित करता है। अगर हम अपने डर को स्वीकार कर सकते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि अभी हम ठीक है, अभी भी हम जीवित हैं, हमारे शरीर में अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा है, हमारी आंखें भी सुंदर आकाश की तरफ देख रही, हमारे कान स्थिर हो, हम अपने प्रियजनों की आवाज सुने तथा बदलने की कुंजी को अपने अंदर बदलने की भावना को जो है रोजन कैश के अनुसार हम बदलने की भावना से हम डर को जाने दे सकते हैं। पूर्णतः कोई डर नहीं है, आप उस तक कभी नहीं पहुंचेंगे। साल्वाडोर डॉली उनका कहना है कि केवल एक चीज है जो आपके सपने और जो अपने सपने को हासिल करना असंभव बनाती है, वो है डर। पाउलो एस्लो अल्केमिस्ट का कहते हैं कि असफलता का डर आपको बंद नहीं करना चाहिए, ये आपको जगाता है। वेनिका रोथ डाइजवेट, एक नाम का डर उस चीज डर को बढ़ाता है। मैंने सीखा है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता है बल्कि वह है जो विजय प्राप्त करता है। नेल्सन मंडेला द्वारा कहा गया। निश्चिंतता से अनिश्चितता की ओर जाने वाले आंदोलन को जे कृष्णमूर्ति द्वारा डर कहा जाता है। डर एक फिनिक्स है, आप एक साथ 1000 बार जलते हुए आप इसे एक बार जलते हुए देख सकते हैं, या फिर फिर भी वापस आएगा। आप डर से प्यार करते हैं, भय का अंत मृत्यु है, भय ही मृत्यु एकमात्र मृत्यु है। भागने और या नियंत्रित करने या दबाने से किसी अन्य प्रतिरोध के बजाय डर को समझने की आवश्यकता है। आप इसे देखें
इसके बारे में जाने, इसके सीधे संपर्क में आए। हमें डर से सीखना है, ना कि इससे कैसे बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे ख्याल से रंजन जी आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, और उषा उमाकांत ने हाथ ऊंचा किया था, फिर शायद वो हैं अभी भी, तो प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करें और क्वेश्चन पूछें। उषा उमाकांत, उषा जी नहीं, वो नहीं है शायद। तो स्पीकर्स आप लोग जो भी ऐड करना चाहें। रंजन जी आपने कुछ बोला मैंने था। ऑलरेडी ऐड कर दिया है वो मुद्दा ओके वगैरह का। ओके यस, कुछ कहना चाह रही हैं संध्या जी? संध्या जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे। अरे सभी को आ रहा है आवाज, मैं तो फुल वॉल्यूम से बोल रहा हूँ। फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू, आवाज नहीं है पूरा। आपका आवाज भी बहुत धीमा आ रहा है अभी। एनीवे मुझे लग रहा है कोई हेडफोन या कोई यूज नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से उनको जो मोबाइल के स्पीकर से ही आवाज आ रही होगी, तो वो थोड़ी आवाज आ रही है। और कुछ एनसी कृष्णा जी हैं, चंद्रकांत शिंदे जी हैं, सुरुलना जी हैं, विमल जी हैं, कुछ और ऐड करना है या कुछ है तो क्वेश्चन हो तो बताइए। उषा उमाकांत जी ने काफी देर तक हाथ ऊंचा किया था, फिर शायद वो चली गई। क्या बोल रही हैं आप? If you type the question, in case if there is anything, I can tell. या प्लीज आंसर। आप कीजिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। I don't know. I can't hear anything. Something wrong at your end, because I can listen don't to know. everyone's voice. उनके पास वो हेडफोन या कुछ होता तो उनको आवाज आती ना, वो मोबाइल स्पीकर यूज कर रही हूँ, उससे हो नहीं, सकता है कि मोबाइल आवाज स्पीकर से तो बहुत क्लियर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवे सर, कोई और कुछ कहना चाहता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं है। ठीक है, चंद्रकांत शिंदे जी आप हैं ना? मेरे ख्याल से सारे लोग यही चाहते हैं कि मीटिंग को समाप्त किया जाए। अबान जी हैं, वो तो हमेशा बोलती हैं। बर्नाली जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ शिंदे जी। દીકરા મારો ડાયો દીકરો છે, મારી દીકરી ડાય। नमस्ते મારો नमस्ते। ડાયો દીકરો। नमस्कार नमस्कार। म्यूट करना है। I think I am quite audible now. Yes, you are audible, sir. Okay, thank you. I must congratulate all the three speakers, Ranjana ji, Sandhya ji, और Avinash ji. Wonderful topic they have selected, and it is good to discuss about the this our own inbuilt instinct, fear. And this inbuilt instinct, fear, all the three members, they have discussed very nicely, and we must go on thinking on this, because unless we investigate ourselves what this instinct, whether whether this instinct is a survival instinct. Fear is a survival instinct, and it is helpful in the sense it is such a fear response which keeps us alive. So we are not discarding fear. It is a survival instinct. It is inbuilt. Fear is inbuilt force within human consciousness, especially in the subconsciousness. And we must begin with the analytical thinking, rational thinking, because it is the man only who can think of it. And of course, thought is the cause, or what we say, fear and pleasure is produced by the thought itself.
But it doesn't mean that we should not explain or explore this animal instinct, survival instinct, not animal, survival instinct. It is there hidden, whether you want it or not. We have to observe how it makes us restless, frightened, weak, energyless, and how it begins to secrete adrenaline hormone, bringing neurochemical imbalance in the body. All such kind of exploration is needed to do for everyone. Observe yourself without any judgment. So this, I think, as soon as we are aware of this fear sensation, Yes. when it comes up, it reduces the energy of the fear and increases in us vitality to face the situation. This is how it holds on from the danger. It is definitely survival force, emotional force, which is there within us. It is inbuilt because as human consciousness experienced the death of vehicles since millions of years, and brain cells have built up this conscience that warns before danger. Some people, they have phobia. Phobia is different from the fear. Some people do have phobia, phobia of dog, phobia of wall lizard, phobia of cockroach. So this is also a kind of inbuilt phobia. So man who is wanted to become something, possess something, that means he also has the fear of losing it, which is the key of fear. When one realizes nothing to possess, Correct. how there can be fear then? So fear of death is the highest fear. Yes. And J. Krishnamurti asks us to learn to die moment to moment, die to moments of anger, jealousy, competition, comparison. So all these we must experience, I think. And that is what I want to add in this. Okay. Fear arises with that of Yes, sir. harm, a threat of harm. It arises Yes, sir. with the threat of harm, whether it is physical harm or psychological harm, whether it is real or Imaginary. yeah, exactly, real or imaginary, because a lot of things Correct. we imagine, and this is after all a negative emotion. But I look at it as the survival instinct. It holds us back, and that leads to we are after the pleasure seeking. So fear and pleasure, though, both go hand in hand, and brain cells have recorded it. Therefore, we used to wish to enjoy it, not only today, but tomorrow. So what is it that gives continuity to fear and pleasure? Yes, sir. That is what Krishnamurti asks. And he comes to the exploration that it is the thought which gives the continuity. Yes, So sir. if we look into our thought of phobia, thought of fear, thought of pleasure, how it arises, and then how it sustains and gives duration to the pleasure. So if we observe this thought, then I am telling about the Krishnamurti because Yes. we dealt with the Krishnamurti and fear. So he asks us
to observe the thought without observer. Thought is the observer actually. So without observer, if we look, one day I was going and one very smart and very beautiful girl looking out of the window of the car. Just she was opened her eyes and I just see what she must be seeing. She is not seeing anything, just observing, just observing, just observing. No reaction Yes, on sir. her face. And we were standing near some signal and Correct. she was just observing. Then I was looking to what she is observing. Here and there I was looking actually what has attracted her. But she was absorbed in her own observation. Yes, So sir. such kind of observation without observer is the solution. That is what Krishnamurti has given us. Not solution. He says, let us explore together. And as Avinash ji once said, time factor. Time Correct. is the thought. And if we come to this, then fear is, we should not be fear about the fear. That is a survival Yes, instinct. sir. Thank And you. it helps us to hold on, and also it helps to survive. Thank you Thank very you, sir. much for Thank giving me this opportunity to share some Arre, thoughts. thank you, And I Shinde ji. also congratulate all the speakers, even Sandhya Rani. Thank you, Shinde ji. Thank you, NC Krishna ji, kindly unmute. बर्नाली जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? एनसी कृष्णा जी की बात कहिएगा. The time is there or time is up? You can have 1 minute. One or 2 minutes. I don't want to take. I don't want to make a mini speech. Yes, sir. We once asked him because the previous night he spoke about death. The next morning, when we met him in the discussion meeting, my friend asked him, "Sir, why am I afraid of death?" Simple answer he gave: "You're not in the present. You're projecting yourself somewhere. So if you start living in the present, you will not be scared of death." So death, everybody dies. Animal dies, the plant dies, I die, you die. What is so strange about it? Death is so natural. Why are you scared? So this is the answer he gave about fear. So fear is something which is happening within us because we are projecting and we want to hold on, as Sanjay ji was saying, hold on to the things which we feel are very dear, and all those things will not be there with us when we go. So that's perhaps the reason why we have the fear. Simple answer is be in the present. Don't project yourself into the future. That's it. Thank you. Thank you, NC Krishna ji. Yes, Varnali ji, if you want to add something quickly, you also have 1 or 2 minutes. सर फियर के बारे में बोलेंगे तो सर मेरा ही प्रॉब्लम है. मुझे रात में डर लगता है, मतलब नाइट में, मतलब यू कैन से, मतलब आई कैन स्टे अलोन इन अ रूम, इन अ सिंगल रूम लाइक. अच्छा, तो सो मतलब मैं अगर रह भी जाती हूँ तो मुझे बुरा सपना आता है, मतलब समथिंग इज लाइक पुशिंग मी, लाइक आई, मतलब मुझे सपना आता है या हकीकत में होता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे नाइट में बहुत ज्यादा है, रात अंधेरे से बेसिकली डर लगता है आपको. तो कोई भी स्पीकर, संजय रानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, या रंजन जी, आप भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, कुछ इस बारे में संदर्भ से उन्हें बताएं. आई थिंक संजय रानी, हाँ, आप बताएं. रात में अंधेरे में डर लगना स्वाभाविक है ऐसे तो, इसलिए तो हमारे वेदों में रात्रि के लिए पूरा सूक्त लिखा गया है, क्योंकि पूरा दिन तो मजा से चला जाता है, रात्रि में ही सब कुछ होता है जो भी होना होता है. पर इफ यू ट्राई टू मेडिटेट, दैट इज, आई थिंक दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, दैट इज बुद्धा's vipassana. If you don't practice all these things, then it is difficult to face darkness. Otherwise, darkness cannot make you afraid of that. I think that is the best solution according to me. What I do is that when I am afraid sometimes, then I do Omkar. I sing also because I am a singer also.
So I sing loudly because nobody is there to hear me. And that also gives me, helps me, like that everyone has to find the solution oneself as to how I can face it. And perhaps that will help you also. Thank you. थैंक यू रंजन जी. थैंक यू Yes, संध्या रानी जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? मुझे भी रात का बहुत डर है because अच्छा. we don't know how to handle. It is dark. देखिए कितनी अजीब बात है That is the main thing. That is darkness and nothing is visible and we don't know how to face it. So fear of the unknown, but fear of something. For me, in case if someone comes, like a chore, whatever it is. So fear of losing whatever I possess. In case if someone comes very near to me, how to face the person. All these things are the main reason for fear in the night or fear of darkness. This is my understanding. जी 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 जी. चलिए, बहुत अच्छी बात है. आई थिंक बर्नाली जी आपको कुछ तो सुझाव दिए रंजन जी ने, हाउ टू ओवरकम डर को. एक और चीज है जो पता नहीं, मैं आप सब ज्ञानी लोगों के बीच कह रहा हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि रात के अंदर अगर आपको डर लगता है अंधेरे से, तो आप ये ट्राई कीजिए कि ओमकार मंत्र वगैरह बोलने के बाद एक छोटा सा नाइट बल्ब कहीं पर लगा के रखिए, जिससे पूर्ण अंधेरा ना हो. जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जाएगी कि पूर्ण अंधेरा नहीं है, तो धीरे 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 आपका वो डर चला जाएगा. आपको रात से भी डर नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है. मैंने 1-2 बच्चों पर ये ट्राई किया था बहुत पहले, तो उन पर ये असर हुआ, क्योंकि कंप्लीट डार्क होने से आप अपने इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, आपकी आंखें देख नहीं पाती, और हम वही चीज महसूस करते हैं जो हम देखते हैं, वही चीज महसूस करते हैं जो हम सुनते हैं. तो रात में नॉर्मली अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ सन्नाटा है, तो आपको यकीनन वो सन्नाटा एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करता है, और उसमें छोटी सी रोशनी, एक दिए की रोशनी जलाइए, थोड़ी देर में दिया बंद हो जाएगा. जो भी आप करना चाहती हैं, एक क्रिया कीजिए कुछ भी, कि अरे मैंने तो अंधेरे को हटा दिया, तो शायद आप ये डर कंट्रोल में आ जाएगा. मेरा छोटा सा बचपन का एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सोच लीजिए, मेडिटेट कीजिए. बचपन में क्या हो गया, व्हाई यू आर सो मच स्केयर्ड फॉर द डार्कनेस. एक्चुअली माय नीस इज देयर, वो अभी 11 साल की है. कुछ डर नहीं है, आराम से घर में किधर जाना चाहता है, कि उसको डर का बात ही पता नहीं है. फियर ऑफ डार्कनेस इज नॉट देयर. सो बचपन में कुछ इंसिडेंट्स गुम आता है, इन कनाडा दैट इज व्हाट दे से, in the dark, na? So to get us scared, to make us eat, to make us steady or something like that. That fear has been inbuilt, I mean inserted into us. So we have to come out of that fear. I would like to suggest you please read many books, Many Lives, Many Masters. It's a wonderful book, how to overcome fear. So if you can, मैम, yes, Many Lives, मैंने many... पढ़ लिया मैम. पढ़ लिया? अच्छा. अरे वाह. लाइट भी ऑन ही रहता है मैम मेरा. बर्नाली जी आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनल तो असम से हूँ, अभी आंध्र प्रदेश में रहती हूँ. वाह, आपकी हिंदी बहुत मीठी है. तो जो किताब आपने पढ़ी है, उसी किताब पर अपने हिसाब से कोई भी मंगलवार को बोलिए, तो जब आप उस किताब का एक बार और अध्ययन करेंगी, शायद आपको कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा उसके उस डर से. हनुमान चालीसा, ओमकार सब लेते हैं मैम. नहीं, वो जो किताब रंजन जी ने सजेस्ट की ना, उसके ऊपर एक त्रिवेणी मीटिंग में आप बोलिए 18 मिनट. ओके सर. जब भी हो आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे आप. एक छोटी जी, ये जो मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स है ना, आप यंग स्पीकर्स को लीजिएगा उसमें. बिल्कुल, क्योंकि मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स हम लोग तो पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ ऑन तो कीजिए वीडियो. अच्छा ठीक है. हम लोग एक्चुअली क्या है ना, पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा वो थॉट बाय करना इजी हो रहा है. लेकिन जो लोगों ने कभी थियोसॉफी के बुक्स, बेसिकली लाइफ आफ्टर डेथ नहीं पढ़ा है ना, लाइफ आफ्टर डेथ इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. बहुत लोग उसको इतना प्रैक्टिकली नहीं मानते हैं. तो कुछ यंग स्पीकर्स को एंगेज करिएगा. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक. मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स पढ़ने से इट इज नॉट अबाउट फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ एनीथिंग. आपको कनेक्शंस दिखेंगे, आपको लाइफ के खुद के कनेक्शंस आपके साथ जो हो रहे हैं वो थोड़े बहुत
आपको रियलाइजेशन में आएगा बिल्कुल। कि मेरा ऐसा क्यों है, नहीं, मुझे ऐसे फैमिली में क्यों मिला रहने को, व्हाई सो एंड सो इज माय फ्रेंड, माय हस्बैंड, माय वाइफ, माय पेरेंट्स, और मे बी राह चलते मुझे कोई इतना अच्छा क्यों लगता है, किससे मुझे इतनी चिढ़ क्यों मचती है, उन सब क्वेश्चंस पे ना आपको क्लैरिटी आने लगेगी। इट्स अ वंडरफुल। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यंगस्टर्स की टीम तैयार करके पक्का मुझे पक्का जो डेट चाहिए वो दे दें। लेकिन बर्नाली जी वर्थ डिस्कसिंग, आपको भी आना है। जब आप डर के बारे में खुद बोलेंगे ना तो आपको एक समझ में आएगा कुछ अलग अर्थ। जी एक रंजन जी बोलिए। आधी मिनट में मेरा एक्सपीरियंस बताओ। अब मैं जहाँ रहती हूँ बिल्कुल लोनली प्लेस है, वहाँ चोर वगैरह का भी डर था। और शुरू में मेरा बेटे ने सोचा कि ये डरेगी और माँ यहाँ नहीं रहेगी, तो उसने क्या किया, मेरे लिए मॉनिटर रख दिया। तो मॉनिटर पे हर एक रूम में क्या होता है, क्या मूवमेंट होती है, वो दिखाई देती है और मैं मस्त आराम से देख के फिर सो जाती हूँ। वही मैंने कहा कि वही मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप एक छोटा सा नाइट लैम्प बहुत छोटा सा जलाएं या थोड़ी देर दिया जलाएं, आपको नींद आ जाएगी। नाइट लैम्प शी हैज केप्ट। सर सब रखा है सर, सब जलाती हूँ, लाइट आपका ऑन डर दूर हो जाएगा, बस आप वो किताब को एक बार बोल दीजिए। हेलो हेलो, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर वीडियो सर जस्ट आई रीच्ड, मतलब घर पहुंची हूँ तो अभी थोड़ा वीडियो ऑन करने का पोजीशन में नहीं हूँ। सो जस्ट टू शेयर समथिंग, नॉट ओनली कि हम अंधेरे में डरते हैं कि चोर है या लाइट जलाने से, डिम लाइट जलाने से डर चल जाएगा। सर समटाइम्स ये होता है जैसे हम ना स्पिरिट को डरते हैं, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, है ना। तो हमें ये फील होता है समटाइम्स, हमें लगता है अकेले जब भी रहते, नॉट ओनली इन द नाइट, इवन इन द डे टाइम, अगर कोई नहीं है, आप अकेले घर में हो, आपको अचानक लगता है कोई चलने का आपको फील होता है, लगता है कोई दूसरे कमरे में कुछ कर रहा है, ऐसे कुछ फील होता है सर। एंड इवन इन द नाइट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो मेन पॉइंट कि हमें डर लगता है। बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं बहुत बार फील करती हूँ कोई, मैं चुप घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, लेकिन लगता है कि मेरे बेड के साइड में कोई पैदल चलकर जा रहा है ना। तो ये सब चीज भी सर माइंड में आता है, तब मन में डर आता है सर। चाहे आप लाइट मुंह हिला रही हैं कि ऐसा होता है सर, होता है सर, डेफिनेटली वही जी भी प्रॉब्लम है। आपको यस बोल रही हैं। ये होता है, मैं इसीलिए दैट्स व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लाइट जलाने के बाद भी क्यों डरते हैं। मुझे डर लगता है, मैं भी अगर 2-3 रूम का भी लाइट जला के रात को सोती हूँ अकेला, अगर मैं घर में अकेली हूँ स्टिल मतलब मुझे डर लगता है, कहीं से मुझे कुछ आवाज आती है। और होता है समटाइम्स आई फेल्ट एक्चुअली, मैंने इट्स नॉट कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मुझे फीलिंग होता है कि कोई जैसे मेरे दूसरे कमरे में कुछ एक्टिविटीज कर रहे, या मेरे कमरे में वो पैदल चलकर गए। इवन समटाइम्स आई आस्क माय हस्बैंड कि आपको लगा कि कोई चलकर गया? बोले नहीं, बोले मुझे फील हो रहा है ना। तो इस टाइप का भी कुछ होता है सर। तो ये भी एक होता होगा, उनके मन में आ रहा होगा, दैट्स व्हाई वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं ये चीज को। जी मैम, क्या होता है या I just want to add a small joke to this, क्योंकि अभी मैम ने बोला कि मेडिटेट करो तो ठीक हो जाएगा। आप जो बोल रही हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया है, आप मेडिटेट मत करो, आपकी जो तीसरी आंख है वो खुल रही है और आपको अननेसेसरी चीजें महसूस हो रही हैं। Exactly. नहीं, sometimes it happens actually. होता है, कभी-कभी होता है। आप ये नहीं कि the person who is doing meditation every day, he or she can get these feelings. Sometimes कभी-कभी होता है, अगर आपका थोड़ा सा माइंड अपर लेवल में है, that also you can catch. ये भी होता है। Whatever I think, मुझे ये फीलिंग्स है एंड ये बिलीव भी मेरा है कि ये भी आपको हेल्प करते हैं कुछ चीज को कैच करने में। एंड I will not divulge the name of the person. Sometimes मुझे लगता है कि ये मेरे कमरे में बैठे हैं शायद, और मैंने I asked, तो नेचुरल वो एक हायर लेवल का पर्सन है, वो बोलते हैं कि हाँ I have visited your house. तो ये भी होता है कभी-कभी, हमें फील करते हैं। आप लोग तो नेचुरली यू ऑल आर वेरी हायर लेवल पर्सन, अब सारे कुछ बुक्स पढ़े हैं, यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ इट। मुझे इतना नहीं है, बट व्हाटएवर आई एम सेइंग कि मेरा ओन एक्सपीरियंस है। કાલે આવશો? હા, હમણાં મારી મીટિંગ ચાલે છે। The point madam is that आप તમે કોણ છો? लेकिन आपको डर नहीं लगना चाहिए।
I mean, you have to देखिए understand that there is आप किसी की बिल्कुल विमल जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि डर नहीं लगना चाहिए आपको। डर लगता है मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को उस डर के साथ लॉक किया है, उसको बहलाने की जरूरत है, उसको और कहीं ले जाने की जरूरत है थोड़ी देर के लिए, अपने आप फिर वो चला जाता है। ऐसा मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कोई अपरिचित जगह पे जाते हैं और एकदम अंधेरा है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहीं कोई खतरा ना हो। ये तो अच्छा है, ये आपकी इंद्रियां बहुत सजग हैं, इसलिए वो आपको ये चेतावनी दे रही है। लेकिन उस चेतावनी को समझना, वो शायद हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए, जो भी अलग अलग मेथड्स बताई आप सब लोगों ने। और अब मैं सोचता हूँ कि किशोर जी अगर आप तैयार हैं तो अतुल जी समापन की ओर बढ़िए, 8:13 हो रही है। हाँ बोलिए अतुल जी। હા, કેશવરબેન સીઓએમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. અવાજ સંભળાય છે મારો? લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. ઓકે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।